us start with unit 3.2 of physics. अब इस यूनिट में हमारे पास क्या क्या है वो देख सकते हैं. सबसे पहले हमने एक टॉपिक डिस्कस करना है. द नेम ऑफ दैट टॉपिक इज व्हाट यू कॉल सोर्स ऑफ लाइट. सोर्स ऑफ लाइट. सोर्स ऑफ लाइट के बाद हमें डिस्कस करना है वेव एंड बीम. राइट. फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करना है दैट इज स्पीड ऑफ लाइट. And then comes the topic which is called the reflection of light and laws of the reflection of light. और उसके बाद हमारे पास टॉपिक है रेगुलर एंड डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट. फिर इसके बाद हमने टॉपिक डिस्कस करना है प्लेन मिरर्स and real and virtual images. Real and virtual images or properties of image. ये हमें कुछ टॉपिक्स डिस्कस करने हैं. This is part 1 of this chapter. Part 1. Now there is part 2 also, which is called the refraction of light, that we will discuss later on. So सबसे पहले जो हमारा यूनिट में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज सोर्स ऑफ लाइट. सो टॉपिक सोर्स ऑफ लाइट. सोर्स ऑफ लाइट. क्या सोर्स ऑफ लाइट है? आंसर है द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट. अल्टीमेट सोर्स ऑफ लाइट. And sun is the ultimate source of energy as well. Right? So otherwise source of light में दो तरह के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं. एक होते हैं luminous objects. One is called luminous objects and another are called non-luminous objects. What are luminous objects? The objects which can emit light are called luminous objects. The objects which can emit lights are called luminous objects. For example, star, luminous object. Electric bulb, tube light, luminous object. और non-luminous कौन से होंगे? The objects which do not emit light are called non-luminous objects. For example, क्या होगा? Moon do not emit their own light. Those who do not emit their own light, for example, moon doesn't emit its own light. Ball, it does not emit its own light. So these are called which type of objects? Non-luminous objects. So if we talk about the source of light, so there are two types of objects. One is luminous objects and another one is non-luminous. Right? The question comes, why luminous objects give light? Right now, first of all, the question, why luminous objects? Why luminous objects emit light? उसका आंसर क्या देंगे? Luminous sources radiate light when their atoms become excited as a result of receiving energy. When their atoms become excited on receiving energy, then the luminous object emits light. When their atoms are not excited, they do not emit light. For example, we have an example of electric bulb. Electric bulb. अगर electric bulb को electricity मिलेगी, तो उसके atoms excited रहे.
जब तक उसको इलेक्ट्रिसिटी देते रहोगे, उसके एटम्स एक्साइटेड रहते होंगे, तब तक उसको लाइट अमिट करता रहेगा। as soon as you vanish this electricity, you switch off the electric bulb, you switch off the source of electricity, this it will stop emitting light. तो इसका मतलब जब तक इसके अंदर एनर्जी मिलती जाएगी, ये लाइट अमिट करता रहेगा। और क्यों लाइट अमिट करता रहेगा? बिकॉज देयर एटम्स बिकम एक्साइटेड। देखो आपको समझा रहा हूं। Now our next topic, ये एक topic we have done, source of light. Now let us discuss rays and beam. ये जो words use होते हैं, rays and beam. The very first question is ray क्या है? Ray, answer है, it is the direction in which light moves. So we can write the direction of path in which light is traveling is called a ray. So the direction of path जिस तरफ लाइट मूव करती है, that is called a ray. On the other hand, beam क्या होता है? So a beam is a stream of light and is shown by number of rays. Stream of light, when more than one ray move, जब हम इसको शो करेंगे तो हम उसको बीम बोलेंगे, राइट? अब बीम में क्या हो सकता है? देखो ये है एक लाइन को हम क्या बोलेंगे? रे. दिस वन इज कॉल्ड रे, बट इट इज ओवरऑल इट इज कॉल्ड बीम. बीम light can be converging or it can be diverging, right? तो ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट है, ये कन्वर्जेंट है और ये डाइवर्जेंट है, राइट? पैरेलल बीम ऑफ लाइट, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट, डाइवर्जेंट. Yes, sir. The next topic is rays and beams done. Now let us discuss the speed of light. Speed of light. You know, light. Speed of light. See, अगर हम इसकी बात करते हैं, speed of light, it is 3 lakh kilometer per second in vacuum. And sometimes we consider the same speed in air also, but in vacuum it is 3 lakh kilometer per second. Or I can also write it as 3 into 10 raised to power 8 meter per second. One and the same thing. 3 lakh kilometer per second. It can also be called 3 into 10 raised to power 8 meter per second. But ये value किसके लिए है? Vacuum के लिए. Sometimes we consider the same value as in air. ये फर्क होता है, लेकिन basic calculation से भी we consider. But when light travels from air to water, yeah, air to glass, we say its speed decreases. Its speed decreases. Speed of light 3 lakh kilometer per second is the maximum speed. Three lakh kilometer per second is next to impossible for us to think. We cannot even reach easily the speed of sound, which is far less than the speed of sound. Oh, sorry, right? This is next to impossible. 3 lakh kilometer एक सेकंड में, मतलब पूरी दुनिया का चक्कर आधे से मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में पूरी दुनिया का चक्कर. Not possible for any मतलब artificial or man-made sound, right? एक और चीज यहाँ पे है, एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन आता है, why lightning is seen before it is heard. ऐसा क्यों होता है? Because speed of light is faster than the sound.
तो जब लाइटनिंग होती है उसमें से जो लाइट एमिट होगी वो हमारे पास जल्दी आ जाती है देन द रूल, बिकॉज दैट इज साउंड। तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें, स्पीड ऑफ लाइट इज far more than speed of sound. So lightning is seen, पहले दिखाई देती है, बाद में सुनाई देती है। Right? Why? Speed of light is less in solid, यानी कि glass. मैं glass का लिखवा रहा हूँ, water वाला आपको दे। So why speed of light is less in solid than glass? तो हम लिख सकते हैं, in glass particles are tightly packed, so it is difficult for light to pass. So speed decreases. There is one more thing that we have to discuss, that is 1 light year. Now what is 1 light year? Answer is 1 light year. 1 light year. It is the distance traveled by light in 1 year. Distance traveled by the light in 1 year. Right? So 1 light year का मतलब क्या होगा? वो होगा 1 year into speed of light. 1 year का मतलब क्या होगा? Answer है 1 year means 365 days into 24 hours into 3600 seconds into 3 into 10 power 8 meter per second. When you will multiply these things, you will get this much meter. This is the distance traveled by the light in 1 year. Longer distances are measured, astronomical distances are measured in terms of it. Why so? Because astronomical distances are very, very large. So it is difficult to put in the smaller units. That is why we are using the smaller units. So next topic, there is reflection of तो लेकिन एक सेकंड से ऊपर दो। बाद में नोट करना। ओके। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, सी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना पड़ेगा। देखो लाइट कहाँ से आती है हमारी अर्थ पे? आंसर है सन से आती है। सन से लाइट हमारी अर्थ पे, राइट? अब देखो जब सन से लाइट हमारी अर्थ पे आएगी, so we have many layers around the earth, many layers in the earth's atmosphere, which is said to be 400 kilometers thick. Sometimes it is said to be 800 kilometers thick, 1200, 36,000 kilometers. But there is a space beyond earth also. We imagine that there are more solar systems also. There is a lot of distance between earth and sun. So when light starts from sun, to reach earth, it has to travel a longer distance. It has to travel through the many layers. करना पड़ेगा कि नहीं? जब ये सन की लाइट अर्थ तक पहुंचना चाहती है, so there are many obstacles in its path. When a light strikes some of its obstacles, so it shows different phenomena. For example, the reflection of light. One phenomenon. Light किससे टकरा के वापस चलेगी, that is called reflection. Refraction of light, light ने अपना path change कर दिया. Dispersion of light, light split हो गई. Scattering of light, diffraction of light, and so on. So light undergoes many different phenomena when it travels from sun till earth, or if it travels in our atmosphere also. अगर मैं शीशे के ऊपर लाइट, अगर मैं लाइट मारी शीशे के ऊपर लगेगी तो रिफ्लेक्ट होगी ना। पार्टी में जब जाते हैं तो होता है ना कि किसी ने अच्छी ड्रेस डाली होती है, उससे भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है।
है ना? So ये तो जब whenever light travels, it undergoes many phenomena. उसमें से जो दो phenomena हैं वो हमने इस चैप्टर में स्पेसिफिकली डिस्कस करने हैं. One is reflection of light, another is refraction of light. वैसे light there are many phenomena, but you will study these in further. आगे बड़ी क्लास करेंगे. Discussion थोड़ा सा स्केटिंग थोड़ा सा कुछ. I hope you got it. So out of these two phenomena, we are going to discuss reflection of. So reflection of light क्या होता है? What is the reflection of light? तो आंसर है the reflection of light. So we can write it as the phenomena of bouncing back of light after striking smooth and polished surface. After striking smooth and polished, bouncing back of the light. Bouncing back का मतलब ये हमारा कोई स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस है, से मिरर. दिस इज मिरर. This is mirror. Suppose you have a torch. You strike a torch, a ray of light to this mirror. It is found that this light will go like this. When the light goes to the same medium जहां से वो आ रही थी, then it is called reflection. Medium होता है through which light travels. जैसे मैंने यहाँ से लाइट मारी मिरर में, वहां से टकरा के वापस आ जाती है, दिस इज कॉल्ड. अगर लाइट क्रॉस कर जाती है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. व्हेन लाइट ट्रैवल्स थ्रू ग्लास, सो दिस इज एयर. अगर यहाँ से लाइट जा रही है, जैसे ट्यूब लाइट है, यहाँ से लाइट जा रही है, तो ग्लास के अंदर जब जाती है वो क्रॉस कर रही है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन. विल डिस्कस इट in detail. But if there is smooth and polished surface, say mirror, then when you strike the light, that comes back. That is why we can see our image in the mirror. But yes, really smooth and polished is the prime definition. Smooth and polished. हाँ, smooth and polished होगा तभी लाइट वापस आएगी. अगर smooth and polished नहीं होगा तो लाइट वापस नहीं आएगी. लाइट क्रॉस कर जाएगी. अगर स्मूथ और पॉलिश नहीं होगा तो लाइट क्रॉस कर जाएगी. इसमें मैं एक और चीज आपको ऐड करना चाहता हूँ. आई विल कम बैक टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वंस अगेन. पहले मैं बता देता हूँ हाउ यू कैन मेक अ मिरर. कैसे बना सकते हो? व्हाट इज एग्जैक्टली अ मिरर? ये देख लेते हैं. मिरर बेसिकली क्या होता है? ग्लास होता है, प्लेन ग्लास. प्लेन ग्लास के पीछे हम सिल्वर पेंट करते हैं. प्लेन ग्लास, विंडो ग्लास टाइप, नॉट एग्जैक्टली द विंडो ग्लास बट डिफरेंट देन दैट. प्लेन ग्लास, उसके पीछे हमने सिल्वर पेंट करते हैं. सिल्वर पेंट से क्या होता है? The light strikes on that silver paint, it reflects power. So it becomes mirror. Sometimes we can see our image in the water also. It becomes mirror. Sometimes we can see our image in the spoon also. It becomes mirror. होता है ना? ग्लास में भी ग्लास में भी हो सकता है. It becomes mirror. तो जितना स्मूथ एंड पॉलिश होगा उतना अच्छा मिरर. कुछ ग्लासेस होते हैं जो सस्ते होते हैं. For example, yesterday I went to a furniture shop to buy some furniture. I visited that shop. There I found a mirror worth rupees 15,600. I was so shocked. A mirror worth rupees 15,600. I thought like I haven't purchased any furniture so far. I just checked it. What is the difference? So, in my opinion, as I observed, if you see your image in the normal mirror and the perfect smooth and polished mirror, in normal mirror your features will not be that bright. Clarity नहीं होगी feature में. लेकिन in that mirror your features will be like fully exposed. This is the difference. Fine lining cut, fine image cut. Getting my point? So जितना अच्छा स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस होगा उतना ज्यादा रिफ्लेक्ट. So how to make a mirror? By polishing it with the silver paint. So better the silver paint, better is the quality. Better the glass, better is the quality. So it depends on the quality. Alright. So reflection of light क्या है? जब कोई smooth and polished surface से light टकराएगी, it will reflect back. This is called reflection of light. Alright. When we discuss about reflection of light, we talk about some terms. जैसे ये टर्म क्या है?
इंसिडेंट रे, ये टर्म क्या है? रिफ्लेक्टेड रे. Got it? Here we draw a 90 degree, और इसका नाम क्या रखते हैं हम? नॉर्मल. क्या नाम रखते हैं इसका? नॉर्मल. So angle between incident ray and normal is termed as I. Angle between normal and reflected ray is termed as R. तो angle I क्या होता है यहाँ पे? Angle of incidence. And angle R क्या है? Angle of reflection. Got it? So what is reflection of light? The phenomena of bouncing back of the light to the same medium when it strikes smooth and polished surface. So when the light strikes smooth and polished surface, it reflects back. जब वापस जाती है तो हम रिफ्लेक्शन में कुछ टर्म्स पढ़ते हैं. फॉर एग्जांपल इंसिडेंट रे, और क्या पढ़ते हैं? एंगल ऑफ इंसिडेंस, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एज वेल एज नॉर्मल. राइट? आई होप you understood this. So write down incident ray. Incident ray. What is incident ray? The ray which strikes mirror, yeah, reflecting surface. The ray which strikes reflecting surface. And the reflected ray, the ray which bounces back after striking mirror. Then normal, the perpendicular drawn to the surface to the point of incidence. The perpendicular drawn to the point of incidence is normal. What is angle of incidence? It is angle between, yeah, incident ray and normal. What is angle of reflection? It is angle between the reflected ray and normal. Next, हमारे पास है laws of reflection of light. Laws of reflection of light. अब क्या है? यहाँ पे laws है हमारे. रिफ्लेक्शन होगा तो कैसे होगा? आंसर है रिफ्लेक्शन होगा तो हमारे पास दो लॉज है. वन लॉ वो कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन. एंगल आई इक्वल्स टू एंगल. दूसरा, द इंसिडेंट रे normal and reflected ray all lie in the same plane. At the point of incidence. All lie in the same plane at the point of incidence. This is important one. How come it is important one? मैं आपको इसका मेन जो पॉइंट है वो मैं समझाने की कोशिश करूँ. सी, पहले देख लेते हैं व्हाट इट सेज. कि जैसे देखो कि यू कैन डू वन थिंग. ओपन योर बुक, पेज नंबर 140. The incident ray, normal, reflected ray all lie in the same plane at the point of incidence. इसका मतलब ये होता है कि जैसे देखो कि एक प्लेन है, उस प्लेन में लाइट यहाँ पे स्ट्राइक करती है. मैं एक्सपेरिमेंट जैसे प्लेन दे देता हूँ. ये प्लेन है, यहाँ पे ये प्लेन, ये जो है इसको मिरर मान. यहाँ से लाइट इधर गई, ठीक है. मिरर से टकराने के बाद दिस लाइट हैज टू गो लाइक दिस.
angle of incidence has to be equal to angle of reflection. Let us suppose this slide goes like this. यहाँ पे एक नॉर्मल है, नॉर्मल एंगल. अब एंगल ऑफ इंसिडेंस सपोज 30 डिग्री है, सपोज 30 डिग्री है, तो यहाँ पे जो पॉइंट है वहां पे 30 डिग्री एंगल बन गया. अब इसमें एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 डिग्री बनाना है, तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटी? तो ये भी पॉसिबिलिटी है, अगर ऐसे कर दूंगा तब भी पॉसिबिलिटी है, अगर ऐसे कर दूंगा तब भी पॉसिबिलिटी है, अगर नीचे भेज दूंगा तब भी पॉसिबिलिटी. 30 डिग्री एंगल है ना, एक लाइन के साथ आपने 30 डिग्री एंगल बनाना है, सो देयर आर मेनी पॉसिबिलिटीज. आप वो 30 डिग्री कैसे बना सकते हैं? आप वो 30 डिग्री ऐसे बना सकते हैं, आप 30 डिग्री नीचे भी बना सकते हो, आप 30 डिग्री इधर भी बना सकते हो, 30 डिग्री इधर भी बना सकते हो. तो उन्होंने कहा ऐसे 30 डिग्री कैसे बनाना है? जिस प्लेन पे अगर ये डायरी के ऊपर से रे आ रही है, तो डायरी के साथ ही जाए, जिस तरह कि ये ना हो कि मिरर से टकरा के आप बोलो मैंने तो 30 डिग्री बना दिया और ऊपर भी ऐसे नहीं. जिस प्लेन में जा रही है उसी प्लेन में माउस. दिस इज कॉल्ड सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन. Got it? I hope. So you can note it down. Laws of reflection of light. Let us see further. The regular and diffused reflection. The regular and diffused reflection. What do you mean by this? Answer है regular reflection. Regular reflection किसको बोलते हैं? जब जो रेज पैरेलल आएंगी, पैरेलल रेज, वो जब पैरेलल आई तो पैरेलल ही वापस चलेगी. दिस टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन इज नोन एज रेगुलर रिफ्लेक्शन. ऑन द अदर हैंड, अगर इरेगुलर सरफेस होगा तो जो लाइट पैरेलल अगर यहां पे स्ट्राइक करेगी, those will not be parallel. This is called diffused reflection. Called diffused reflection. Right? अब की पॉइंट क्या है यहाँ पे? नोटवर्दी पॉइंट क्या है? स्टार मार्क. नोटवर्दी पॉइंट ये है, इस केस में तो क्लियर है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल आई और आर इक्वल है. क्या इस केस में भी एंगल आई और एंगल आर इक्वल है? आंसर इज यस. इन दिस केस आल्सो एंगल आई और यहाँ पे एंगल आई और एंगल आर इक्वल है, यहाँ पे भी एंगल आई और एंगल आर. पर सर ये तो पैरेलल नहीं, ये पैरेलल. ये पैरेलल इसलिए है क्योंकि ये प्लेन सर मतलब ये स्ट्रेट लाइन सरफेस है, इसलिए आपको दिखाई दे रहा है कि एंगल आई और एंगल आर. अगर आप इसको भी नॉर्मल ड्रॉ करके मेजर करोगे, ये वाला एंगल, ये एंगल, और नॉर्मल ड्रॉ करके मेजर करोगे तो ये एंगल भी इक्वल. Whenever there occurs reflection, it is always true. It has to be true that angle I or angle R. No reflection can occur without angle I equals to. Okay? It seems that angle I or angle R are not equal here, but it is not true. Angle I or angle R here. So हम इसका यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख सकते हैं. Right up. Regular reflection. Regular reflection. कौन सा है? If parallel beam of light falls on a mirror and it is reflected as parallel beam, this type of reflection is called regular reflection. दूसरा है irregular reflection. If parallel beam of light falls on mirror and it is reflected it is reflected irregularly. This type of reflection is called
is regular. Next topic here is image. Image. So when do we say image is formed? When do we say image is formed? What's that? Image is formed when two or more reflected or refracted rays meet or appear to. When two or more reflected or refracted rays meet or appear to. In case of meet, तो कौन सी इमेज बनती है? रियल इमेज. In case of appear to meet, तो कौन सी इमेज बनती है? वर्चुअल इमेज. राइट? तो आगे हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इमेजेस. ये दोनों क्या है? टाइप्स ऑफ इमेजेस. एक है रियल इमेज और दूसरा क्या है? वर्चुअल इमेज. तो रियल इमेज के वाले कॉलम में लिखेंगे रियल इमेज. बाद में लिखेंगे the type of image formed when two or more reflected or refracted rays actually meet. इसमें क्या आएगा? The type of image formed when two or more reflected or refracted rays appear to meet. Appear to meet. इसमें actually meet. दूसरा हमारे पास है real images can be taken on screen. स्क्रीन पे ली जा सकती. Virtual images cannot be taken on. इसको स्क्रीन पे नहीं दिखाई. Let us see what we have done so far. हमने क्या क्या कर लिया है आज की क्लास में. So सबसे पहले source of light. What is source of light? The answer is sun. Luminous objects, non-luminous objects. Luminous objects कौन से होते हैं? Which emit light. Non-luminous objects which do not emit ray क्या होती है? The direction in which the light travels. And beam क्या होती है? Direction of rays. Speed of light. What is the speed of light? It is 3 lakh kilometers per second or 3 into 10 to the 8 meter per second. Speed of light in vacuum is 3 lakh kilometers per second. As the light enters the water, its speed decreases. As the light enters glass, its speed decreases. Right? And there is one more question: why lightning is seen before the thunder is heard? Because speed of light is much more than speed of sound. फिर हमने क्या पढ़ा? Reflection of light. What is reflection of light? The phenomena of bouncing back of the light to the same medium after striking smooth and polished surface. Next हमने discuss करा laws of reflection. Laws of reflection in the light equals to angle R. And second one was the incident ray, the reflected ray, and the normal. All lie in the same plane at the point of incidence. Next हमारे पास है regular and diffuse reflection. Regular reflection कौन सी होती है? In which parallel beam of incident ray after reflection goes parallel. Diffuse reflection कौन सी होगी? In which parallel beam of incident ray after reflection do not go parallel. फिर हमने पढ़ा है real and virtual image. Real image कौन सी होती है? Which can be taken on screen. Virtual image कौन सी होती है? Which cannot be taken on screen. Real image वो होती है जिसमें rays actually meet करती हैं और virtual image वो होती है जिसमें rays actually meet नहीं करती. Right? Yes or no? Now,